हमारे जो 5 सेंसेस हैं, कल हमने बात की थी सेंस ऑफ साइट, इसके लिए हम वर्ड एनएलपी में यूज करते हैं विजुअल। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि हम में से हर एक शख्स अपने इन तमाम सेंसेस को यूज करता है। ओके, कोई एक सेंस रिलेटिवली ज्यादा इस्तेमाल, मसलन मैं राइट हैंड से लिखता हूं तो मुझे कहते हैं राइट हैंडेड, अगर मैं लेफ्ट हैंड से लिखता तो कहते हैं लेफ्टी, राइट। अगर कोई शख्स लेफ्टी हो, क्या इसका ये मतलब है वो अपना राइट यूज नहीं करेगा? उसका फिर उसे हम लेफ्टी क्यों कह रहे हैं? कि उसका राइट कम, बट लेफ्टी हम क्यों कह रहे हैं उसको? राइट करता है, लेफ्ट ज्यादा यूज, उसका लेफ्ट ज्यादा यूज होता है। और किसी को हम कह रहे हैं राइटी, और व्हाट डज दैट मीन? राइट यूज ज्यादा यूज। एग्जैक्टली, इट डजंट मीन कि लेफ्ट जो है वो बिल्कुल यूज नहीं होता। ऑल दैट मींस इज कि उसका ये डोमिनेट करता है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह कुछ लोगों के अंदर जो डोमिनेटिंग सेंस होता है वो विजुअल होता है। ओके, और तकरीबन 60% लोगों में जो सेंस होता है डोमिनेटिंग, वो सेंस ऑफ साइट होता है। जनरली ये लोग दुबले होते हैं। जनरली ये लोग, अगर आप इनको देखेंगे कि जो ब्रीदिंग होगी वो सीने से होगी। ओके, ये लोग बात करेंगे तो इनकी आंखें ऊपर की तरफ जाएंगी, इनके जो जेस्चर्स होंगे दे पॉइंट लेट मी सी, ओ यू से, और इनके जो अल्फाज होंगे दे विल बी लाइक विजुअल ज्यादा होगी, लाइक यू इमेजिन, कैन आई टीच और डू यू वांट लुक, सी। ओके, नाउ इनकी जो और इनकी जो बात करेंगे दे स्पीक मच फास्टर, और इनकी आवाज जो भी विल बी हाई पिच्ड। हाई पिच्ड आवाज में तेज बात करने की इसकी वजह ये होती है कि इनके ज़हन में जो इमेजेस आ रहे होते हैं वो इतनी फास्ट आ रहे होते हैं, वो फास्ट इमेजेस के साथ उनको पेश रखने के लिए दे टेंड टू स्पीक वेरी फास्ट। उसकी एक वजह ये है बिकॉज इंसान अगर चुप करके भी बैठा हो तो उसके ज़हन में इंफॉर्मेशन मुसलसल उसके 5 सेंसेस, इसकी जो सेंस ऑफ साइट से आ रही होती है, बिकॉज सेंस ऑफ साइट सबसे ज़्यादा उसके अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है, इस वजह से उसके ज़हन में इमेजेस बहुत तेजी से आ रहे होते हैं। एज अ रिजल्ट दीस पीपल फाइंड टेंड टू बी स्पीकिंग वेरी फास्ट। You get this? Okay. Generally, as I said, there are like 60% people. Next, हमारे पास is sense of hearing. और sense of hearing के लिए word we use is auditory. तकरीबन 20% लोग auditory. Okay. Generally ये ना मोटे, जिसे हम कहते हैं you know पतली हड्डी, दरमियानी हड्डी, मोटी हड्डी, ये दरमियानी हड्डी वाले लोग हैं. Okay. और ये लोग, इनकी जो ब्रीदिंग होगी वो आपको यहाँ से डायफ्राम से नजर आएगी। इनके जो जेस्चर होंगे, इनका सर जैसे एक साइड पे विल फाइंड इट इज टिल्टेड इन वन डायरेक्शन। इनके जो इशारे होंगे दे विल बी टुवर्ड्स देयर ईयर्स। इनकी आंखें दे मूव एट द लेवल ऑफ देयर ईयर्स। उनकी आंखें विल मूव अप, इनकी आंखें विल मूव टू द लेवल ऑफ देयर ईयर्स। एंड व्हेन दे स्पीक एंड यू विल फाइंड इनकी आवाज में देयर इज मोर रेजोनेंस। और जब ये बात करेंगे they will speak bit slowly because they hear sounds inside, and before they say anything they tend to hear those voices. Okay, उनके जो अल्फाज होंगे they will be like hear, sound, loud, okay, those kind of words. This is a listing environment. Okay. Then third we have what we call the kinesthetic. Okay. तकरीबन 10% लोग fall into this. ये generally मोटे होते हैं. Okay, they tend to be bulky. इनकी जो breathing है, it's from their abdomen. You will see in their eyes move down towards their right. Okay, so it's like if you're looking at them, it's like this is my right, the eyes going down in this direction. Okay, they speak in a more slower, deeper voice, and they want to touch. No, okay, and they want to feel things. They want to touch. They want to touch you. They want to touch themselves. They will want to touch something. और इनके जो अल्फाज होंगे वो लाइक फील,
hot, warm. And like लोग एक ज़माने में बड़ा गर्म जोशी हुआ करती थी लोगों में, अब लोग ठंडे हो गए, अब लोगों में वो बात नहीं है, वो एहसासात ख़त्म हो गए, वो कनेक्शन होता था. So they're like more into feelings. Okay? Now, here हमारे पास olfactory and gustatory. ये दोनों मिला के तकरीबन 10% होते हैं. ओके, olfactory वाले जो हैं इनके लिए डोमिनेटिंग सेंस है, और इनका जो है ओके, सो इट्स लाइक देयर मोर वो टेस्टर्स जो होते हैं खाने के. ओके, लेकिन ये जो तीन सेंसेस हैं, सिंस दे कवर एंड ये एज अ होल, इसे हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम, बिकॉज हमारे ब्रेन को जो इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट हो रही है, इट इज थ्रू दीज 5 सेंसेस. And so we call this as a whole system, we call this as a representational system. Now ये जो हमारे 5 senses को information आ रही है, इनमें से ये जो 3 senses हैं, these are like 90%. So इन 3 को we call them major representational systems or RAM systems for short. Okay, now I'm saying it again. Our objective is not to label people. We use all of these senses. Okay? ये एक टेक्निकल एरर होती है कि कोई बोले कि जी मैं विजुअल हूँ और दूसरा ऑडिटरी है. Years ago, I met a woman who came to me. She had attended some training somewhere, and she came to me and she said कि मैंने तो अपनी NLP की ट्रेनिंग के बाद मैंने तो डिवोर्स कर लिया. And I said, क्यों? She said because मैंने इसमें सीखा था, ये इसमें लोग विजुअल ऑडिटरी, तो मैं बड़ी विजुअल हूँ, और मेरा जो हस्बैंड था ना वो बिल्कुल ऑडिटरी था, तो हमारी तो रैप हो ही नहीं सकती थी. And I was like, okay, so just think of it. अगर बच्चा हो गया, मैं विजुअल को हो जी सॉरी, ये गलती से मेरे पास ऑडिटरी वाला आ गया, आपने ना आपका विजुअल नहीं मिले थे. It's a stupid way of thinking. Okay. In fact, I think the trainer who actually taught it that way made a big error, disservice to the client, to the student. Your objective, my objective here is to learn so that we can actually consciously, deliberately shift into any of these as and when we want to need to. And that's the whole idea. Okay? We want to have flexibility in ourselves. कि अगर फर्ज कीजिए, if I'm in a business situation और मेरे पास कोई क्लाइंट जो है विजुअल का आता है, तो उस और मैं भी अगर फर्ज कीजिए विजुअल डोमिनेटिंग है मेरा, तो उसके साथ तो मैं रैप को बना लेता. लेकिन अगर मेरे पास ये जो 30% है, what will happen to them? I miss that business. Or what if the person I'm kinesthetic, and so I will miss like this much, 80%, or this 90%? Does this make any sense? That's not the point here. It's like कि अगर फर्स्ट कीजिए, ये जो है 5 senses by the way, this is the language of the brain. ब्रेन की लैंग्वेज उर्दू, इंग्लिश, सिंधी, पंजाबी नहीं है. ब्रेन की प्रोसेसिंग लैंग्वेज ये है. जिस तरह जो कंप्यूटर के ऊपर जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होती है, वो कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है, राइट? जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो इट्स अ डिफरेंट लैंग्वेज जिसपे इनकोडिंग डिकोडिंग सारी हो रही है. ये हमारे ब्रेन की प्रोसेसिंग लैंग्वेज है, ये 5 सेंसेस. ठीक है? सो अभी we'll do some exercises to develop this. By the way, अगर first करो, a visual person and an auditory person and a kinesthetic person, these 3 people go into a same situation, and you ask them, how was it? How was the party, for example?
So the visual person से यार क्या जबरदस्त दावत थी ना, जब देखा ना ऐसी खूबसूरत उन्होंने लाइटिंग लगाई थी और सब लोग इतना खुश थे, लाइक क्या ड्रेसिंग थी इतनी जबरदस्त, जो होस्ट थे ना इतने प्यारा उन्होंने जो सूट पहना था, उनकी बीवी उफ इतने खूबसूरत उनके फूल थे उनके ऊपर, यार क्या उन्होंने जबरदस्त सेटअप बनाया हुआ था, सारा स्टेज लगाया हुआ था, उन्हें देखकर मजा आ गया. You ask this person says क्या जबरदस्त यार, एक एम्बियंस था, उन्होंने पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाया हुआ था, इट वाज सो नाइस, जिससे भी बात करो हर आदमी जो है ना बड़ा खुश सुनाई दे रहा था ऐसे. और उनसे मैंने जो वो जिन होस्ट थे उनसे मैंने बात करी, he was so excited, you know, it felt so, you know, I felt such a strong, you know, sense of connection with him. It was so good. This person, इससे पूछो क्या environment था, it was cool यार, really cool. वहाँ पे जाकर ना ऐसा आपको फील हो रहा था कि like even though इतनी गर्मी थी मगर उन्होंने पूरे ACs लगाए हुए थे and it was so comfortable, everyone was really comfortable in that situation. Now they are talking about exactly the same event but they are processing in different modes. अब क्या हुआ कि फर्ज कीजिए कि मेरा जो डोमिनेटिंग सेंस है वो ये है और जो मुझे बता रहा है वो ये है. अब उसको अगर मैं रिस्पॉन्स देता हूँ यार तुम्हारी बात सुनकर मुझे मेरा ख्याल है मुझे भी देख जाना चाहिए था, है ना, वो कह रहे मेरी बात तो यार पूरी देख तो लो पिक्चर. ओके, वो मुझे पिक्चर दिखाना चाह रहा है, मैं उसकी स्टोरी सुन रहा हूँ. बीच में नॉइजेस होती हैं, so the message sent and the message received is never equal. Okay, it's because we are processing in different language. So as practitioners, जिन skills पे हम अभी काम करेंगे वो ये कि even if we are in the middle of a sentence, we can switch from one to the other actor.